जय हिंद जय भारत जय उत्कल जय जगन्नाथ समस्त को पुणी थे स्वागत एमएफटी सफलतार यूजीसी नेट एजुकेशन सीरीज को आज आम पढ़ा टीचर एजुकेशन यूनिट 4 अच्छी आपण देखिपारे यूजीसी नेट सिलेबस टीचर एजुकेशन जहाँकि गोटे इम्पोर्टाट रोल प्ले करे यूजीसी नेट एग्जाम रे कारण ये मैक्सिमम क्वेश्चन आम देखा एनसीईआरटी एनसीटी हो कि आम देखा मॉडल जो रही थियोरीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज बेस्ड टीचर एजुकेशन फ्रॉम वेरियस पॉइंट ऑफ व्यू ठीक अच्छे सुलेमान्स डेंग लक हबरमास बिहेवियरिस्टिक कॉम्पिटेंसी मॉडल है ओरिएंटल टीचर एजुकेशन मॉडल है ए बहुत किसी क्वेश्चन आसी था एवं यार इम्पोर्टाट कॉन्सेप्ट गुड़िक आज आम डिस्कस करवा प्रथम यूनिट 4 आज आम पढ़ा जाऊँ कौन यूनिट 4 टीचर एजुकेशन फास्ट बीट ठीक अच्छे ए जो लिखाई अच्छी कहीदेवी मीनिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन टाइप ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम द स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन करिकुलम एंड its vision in curriculum documents NCERT NCT at elementary secondary higher education level organization of component of free service teacher education transactional approach कौन रही जमी एक्सपोजिटोरी है कोलाबोरेटिव है कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है आपको आज हम पढ़ा एक क्वेश्चन आंसर समस्ते कमेंट सेक्शन जनइबे एवं which of the following commission recommended for the establishment of Indian education service ठीक अच्छे इंडियन एजुकेशन सर्विस यार कीवर्ड हम याकू क्यों एजुकेशन रेकमेंडेड करथिला फर्स्ट इम्पोर्टेंट रेकमेंडेड नॉट इम्प्लीमेंटेड यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन ना कोठारी कमिशन हम शेष नेशनल नॉलेज कमिशन हम यार राइट आंसर मत कमेंट सेक्शन ले निहतर जनइबे देखा किए फास्ट जनाऊे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आंसर किसी पिला पचारि द कोठारी कमिशन रिपोर्ट वाज एंटाइटल्ड ऑन लर्निंग टू बी एडवेंचर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एजुकेशन एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी यह हेब ना कारण तार क्लीयरली मेंशन अच्छे डॉक्यूमेंट पर आप देखिए ऑफिशियल वेबसाइट जाकि लिखाई थो एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए कारण कोठारी कमिशन भाव कौन कहला एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट विषय कहला ठीक अच्छे आम जे टीचर एजुकेशन को सीधा सड़क काढ़ु टीचर एजुकेशन लिखाई मीनिंग नेचर स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन ए गोटे क्वेश्चन फाइनाली आसे एग्जाम रे मीनिंग ऑफ टीचर एजुकेशन आम एनसीटी को रेफरेंस पॉइंट नहीं से कौन कहे टीचर एजुकेशन एज ए प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सन टू टीच फ्रॉम प्राइमरी टू हायर एजुकेशन लेवल यार एनसीटी कौन डेफिनेशन कौन कहे टीचर एजुकेशन हूँ एमती एक प्रोग्राम जो आम कौन करते रिसर्च करते ट्रेनिंग नहीं क्या देते पर्सन को जे कि कौन कर पढ़ाई सक्षम हो प्राइमरी टू हायर एजुकेशन लेवल फ्रेंड्स ये कही रखी आपण मानू टीचर एजुकेशन ले टीचर एजुकेशन कौन पे आवश्यक व्हाई द टीचर एजुकेशन नीड इन 21st सेंचुरी कॉम्पिटेंट डेवलपमेंट फुलफिल टीचर बेसिस नीड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ओवरऑल द चैलेंजेस होलिस्टिक पर्सन को गढ़ाई 3 टाइप्स ऑफ फ्रेम टीचर वर्क टीचर एजुकेशन इन कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क हम देखा तेज देखा पाइबा 3 टाइप ऑफ फ्रेमवर्क टीचर अच्छे कौन कौन से फ्रेमवर्क गोटे हूँ देखिए टीचिंग स्किल पेडागोजिकल थ्योरी प्रोफेशनल स्किल ठीक अच्छे ये जो रहा टीचिंग स्किल पेडागोजिकल नॉलेज पेडागोजिकल थ्योरी आम जाना आउ प्रोफेशनल स्किल ये 3टा बहुत इंपोर्टेंट ठीक अच्छे यह एनसीईआरटी फ्रेमवर्क लिखाई टीचिंग स्किल भितर बहुत सारा स्किल आसो सॉफ्ट स्किल है आम कहीपर क्वेश्चन आंसरिंग स्किल है इवैल्यूएशन स्किल है इंट्रोडक्शन स्किल है प्रेजेंटेशन स्किल है पेडागोजिकल थ्योरी हाउ टू डिलीवर
द कंटेंट with the effective manner आम पेडागोजिकल थ्योरी आमको बाट देखो प्रोफेशनल स्किल कौन आम के डेडिकेटिवली पाठ पढ़ुं के इफेक्टिव के डायनामिक के फ्लेक्सिबल के एग्जाम ओरिएंटेड के प्रैक्टिकल ओरिएंटेड के आम कम्युनिटी ओरिएंटेड के आउटसाइड ऑफ द फोर वॉल ओरिएंटेड दिस प्रोफेशनल स्किल भीतर आसो ठीक अच्छे। नेक्स्ट नेचर ऑफ टीचर एजुकेशन फ्रेंड्स ये किसी नेचर मुझे लिखी से नेचर रे आप देखिपारे इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट्स प्री सर्विस एंड इन सर्विस फ्रेंड्स टीचर एजुकेशन नुहे केवल टीचर एजुकेशन नुहे केवल कौन प्री सर्विस ये मध्य इन सर्विस भाई काम करे प्री सर्विस कौन जो मैंने बीड पिला सिटी पिला एमएड पिला जो मैंने टीचर होवाई तैयार होती अर्थात तैयारी कराऊँ से ट्रेनिंग नौ आज प्री सर्विस इन सर्विस कौन आम देखिपर इन सर्विस भितर कौन आसो आम टाइम टू टाइम अपग्रेडेशन कंटिन्यूअस इवोल्यूशन ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू टाइम कॉम्पिटेंसी ट्रेनिंग है आम जो मैंने टीचर अच्छा सर्विस अच्छा से कौन करा आम टाइम टू टाइम कॉम्पिटेंसी करने ट्रेनिंग दबा टीचिंग दबा ठीक अच्छे। इट इज बेस्ड ऑन द थियोरी दैट टीचर्स आर बोर्न नॉट मेड टीचर्स मैंने जन्म होता है नुह तैयारी कराए कौन कर कॉम्पिटेंसी कराइबा भीतर नॉलेज को एनहांस करवा सिंस टीचिंग इज कंसीडर एन आर्ट एंड साइंस बोथ टीचिंग एज ए आर्ट एंड साइंस ठीक अच्छे कहीं विभिन्न प्रकार स्किल अच्छे साइंस मीन्स डिफरेंट स्टेप अच्छे जमीक आम कहीपर प्रथम कौन इंट्रोडक्शन देन प्रेजेंटेशन देन आम कहीपर इवाल्यूशन ये तीन मेन सिस्टम अच्छी जो आमर ताको आम नहीं कहते साइंटिफिक वे बोली कहती ठीक अच्छे। द टीचर हैज टू एक्वायर नॉट ओनली नॉलेज बट ऑल्सो स्किल केवल शिक्षक नॉलेज को ग्रहण करते नहीं से स्किल को मध्य ग्रहण करें ठीक अच्छे ना। इट इज ब्रॉड एंड कम्प्रिहेंसिव यस फ्रेंड्स टीचर एजुकेशन बहुत आम कहीपर सबुठ ब्रॉड होता है कारण प्राइमरी ठारू हायर एजुकेशन पर्यंत सबू ब्रांच रे टीचर एजुकेशन आवश्यकता अच्छी पेडागोजिकल आवश्यक सबुति अच्छी से मेकानिकल टीचर हो फिजिकल टीचर हो फिजिक्स टीचर हो बायोलॉजिकल टीचर हो किंबा एजुकेशन टीचर हो समस्त पेडागोजिकल नॉलेज दरकार तेणु ये ब्रॉड और कम्प्रिहेंसिव अटे। इट इज वेरी इवॉल्विंग एंड डायनामिक बिकज इट इज ए वेरी डायनामिक पर्सपेक्टिव एव्री फील्ड टीचर अच्छा सी कहूँ इट इज ए सिस्टम दैट इन्वॉल्व्स एन इंटरडिपेंडेंस ऑफ इट्स इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट बिकज आम टीचर एजुकेशन कौन करती इनपुट दिखती इंफ्रास्ट्रक्चर हो प्रोसेस किए करती टीचर करती आउटपुट किए स्टूडेंट बा फ्यूचर टीचर इनपुट प्रोसेस ऑफ पेडागोजिकल स्किल आउट मीन्स क्रिएट ए न्यू टीचर यह हूँ इंटर डिपेंडेंस इन इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट ठीक अच्छे ना। स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन यह पूरा पढ़िया पूर्व आम देखा फ्रेंड्स टीचर एजुकेशन ले आगे किसी आपण तथ्य देवी टीचिंग स्किल देखिले अप्रोच टेक्निक्स स्ट्राटेजी वे ऑफ टीचिंग मेथड आम कह टीचिंग स्किल कौन कह टीचिंग स्किल कहवा ये टीचिंग स्किल माने कौन अप्रोच टेक्निक्स स्ट्राटेजी वे ऑफ टीचिंग और मेथड आम कहीपर ठीक अच्छे मेथड कहीपर। पेडागोजिकल कौन एरिया ऑफ नॉलेज साउंड नॉलेज इन प्रैक्टिकल एरिया हाउ टू डिलीवर कंटेंट हाउ टू अंडरस्टैंड द प्रोफाइल्स हाउ टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ टीचिंग ठीक अच्छे। पेडागोजिकल मीन्स हम कहीपर approaches how to deliver content knowledge experiences among the student। professional skill कौन how a teacher guides some IT skill counseling interactive skill interactive पिला मानू का मैं बुझी पारिया मैनेजमेंट स्किल इट इज ए प्रोफेशनल स्किल ठीक अच्छे। आमे कौन करती 3 स्टेजेस ऑफ टीचर को 3टी भाग में विभक्त कर ट्रेनिंग देला बेले टीचर ट्रेनिंग रे
कौन कौन फास्ट हूँ प्री सर्विस कही सारी प्री सर्विस कौन प्री सर्विस गोटे हूँ इंडक्शन यहीटा आम बुझना ये बुझे इंडक्शन कौन आउट हूँ इन सर्विस प्री सर्विस टीचर हाँपाई जो मैंने आगू अच्छे से ट्रेनिंग देवा इन सर्विस जो टीचर अच्छा से ट्रेनिंग देवा क्लीयर ना किंतु इंडक्शन कौन कौन जो मैंने नुआ जॉइन नहीं थे इंडक्शन आज ए कौन ओरिएंटेशन ठीक अच्छे से आम ओरिएंटेशन करवा केते फैसिलिटी अच्छी 1 month ट्रेनिंग दि सिचुएशन आम इंडक्शन कहीपर गोटे 2 मास आम ट्रेनिंग देवा इंडक्शन करने केमी पिला पढ़ेबे स्थिति कौन परिस्थिति कौन सिचुएशन कौन केते फैसिलिटी अच्छी केते दरमा कौन कौन सब बेनिफिट अच्छी आम पिला कौन कर न्यू स्किल आम केमी कौन पढ़ेबा बुझेबा ऑल सिस्टम ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोवाइडेड ए न्यूली जॉइन टीचर थ्रू द इंडक्शन प्रोसेस ठीक अच्छे आमर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर एजुकेशन जनरल ऑब्जेक्टिव कौन कौन रही फास्ट केतटा ऑब्जेक्टिव आम कहवा पाखापाखि 20टा ऑब्जेक्टिव टीचर एजुकेशन ले मुख्य भाव अच्छी फास्ट गुड कमांड ओवर द सब्जेक्ट मैटर बहुत इंपोर्टेंट प्रथम ऑब्जेक्टिव टीचर एजुकेशन गुड कमांड ओवर द सब्जेक्ट मैटर 2 कौन आसो नेसेसरी पेडागोजिकल स्किल 3 कौन आसो एटीट्यूड ऑफ डेवलपमेंट 4 आसो यूज प्रॉपर इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी 5 कौन आसो बोथ थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज क्रिएटिव एनवायरनमेंट 6 कौन आसो फॉर्मल इनफॉर्मल टीचिंग 7 आसे कौन कहीपर अंडरस्टैंड एक्शन रिसर्च अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द स्टूडेंट एक्शन रिसर्च कौन होता है लोकल एरिया प्रॉब्लम टीचर लोकल एरिया कौन तार स्कूल होता है ठीक अच्छे एक्शन रिसर्च को भलसे बुझा और तार यूज करिया डाइवर्स टीचिंग मेथड ऑल्सो यूज्ड क्रिटिकल पेडागोजिकल टाइम अर्थात क्यों समय कौटा आवश्यक हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट शेप आवर मेक गुड पर्सनालिटी फ्रेम इंटरनल एंड एक्सटर्नल जजमेंट डेवलपमेंट ऑफ रेशनल concept general information to provide abstract teaching power understand of whole personality teacher should only facilitate a rule এটা হচ্ছে 21st century স্কিল অর্থাৎ টিচার আজ এ ফ্যাসিলিটেটর রিসার্চ ওরিয়েন্টেড টিচার হওয়া দরকার ওন জজমেন্ট লেভেল হওয়া আবশ্যক ক্রিটিকাল থিঙ্কিং টিচার রহা আবশ্যক সলভ একাডেমিক এন্ড প্রফেশনাল প্রবলেম মধ্য রহা দরকার বায়ো সাইকো সোশিয়াল নিড ऑल्सो अंडरस्टैंड बायो पिलार कौन फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज होची किपरि भाव पिलारी स्ट्रेस नौ किपरि भाव मोटिवेशन दरकार क्यों कौन साइकोलोजी केते सी कैपेबल हो पार्थिव सोशल केते इंटरेक्टिव हो पार्थिव ताहा आवश्यक अटे प्रोवाइड स्कोप फॉर द रिसर्च एनवायरनमेंट फॉर द स्टूडेंट्स देखिए स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन फ्रेंड्स एबे हम देखिबा टीचर एजुकेशन कौन स्कोप अच्छे द स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन कैन बी अंडरस्टैंड इन द फॉलोइंग वे केतटा वे आम देखा गोटे हूँ एट डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन प्राइमेरी ठूँ हायर एजुकेशन ट्रांगुलेशन बेसिस ऑफ टीचर एजुकेशन फिलोसफी टू सोशियोलॉजी एस्पेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन देखा 3 लेवल कराला गोटे हूँ एट दि डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन ट्रांगुलर बेसिस ऑफ एजुकेशन टीचर एजुकेशन सिस्टम एस्पेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन ठीक अच्छे फास्ट देखा टीचर एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन जमी आम कहीपर प्री प्राइमेरी अंगनवाड़ी आम कहीपर प्राइमेरी एलिमेंटारी सेकेंडारी हायर सेकेंडारी और हूँ टर्सियारी अर्थात हायर एजुकेशन सिस्टम ग्रेजुएशन +2 +3 PG सो द टीचर एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल इन वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ प्राइमेरी फास्ट पिलाटी प्राइमेरी जाए तापर प्रिलिमिनारी प्राइमेरी प्री प्राइमेरी अंगनवाड़ी जो कथा प्री प्राइमेरी प्राइमेरी एलिमेंटारी सेकेंडारी हायर सेकेंडारी एजुकेशन और टर्सियारी को हायर एजुकेशन PhD पर्यंत रही ट्रेंगुलार बेसिस ऑफ टीचर एजुकेशन कौन फिलोसफिकल सोशियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल या बेस करके टीचर एजुकेशन करिकुलम फ्रेम करवा ठीक अच्छे फिलोसफिकल टीचर एजुकेशन कहीं इंपोर्टाट सोशियोलॉजिकल टीचर एजुकेशन कौन गुरुत्व रही साइकोलॉजिकल पिलार नीड कैपेसिटी इंटरेस्ट एटीट्यूड बिहेव्स बिलीफ्स सिस्टम
आखि आगे रखिकी तांकर करिकुलम को फ्रेमवर्क करवा। लास्ट होची आस्पेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन। कौन कौन सब आस्पेक्ट अच्छी? टीचर एजुकेशन इज कंसर्न विथ द आस्पेक्ट सच एज हु किए पढ़ेब, होम क्या पढ़ेब, ह्वाट कौन पढ़ेब, हाउ केमिति पढ़ेब। हु टीचर एजुकेशन बा टीचर एजुकेटर जे पढ़ेब, होम स्टूडेंट टीचर बा आम कहीपर इन सर्विस प्री सर्विस पुपिल्स, ह्वाट कंटेंट कौन रहिबो, हाउ टीचिंग स्ट्राटेजी और पेडागोजिकल अप्रोच कौन रहिबो। ठीक अच्छे। नेक्स्ट बा टाइप्स ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। आपणकर यूजीसी नेट सिलेबस अच्छी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, टाइप ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आराम से काढ़ी देखो। प्रथम वीडियो लिखाई मीनिंग नेचर स्कोप इम्पोर्टेंट टीचर एजुकेशन एवं टाइप ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। कौन प्रथम कौन कौन सब प्रोग्राम आम कंट्री अच्छी किए करे प्रायतः एनसीटी यहाँ जोगाई थाए किपरि भाव में प्रोग्राम हम कहीं हम आ एनसीईआरटी एससीईआरटी बहुत क्षेत्र सहयोग करती। प्रथम देखा टाइप्स ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम रे प्री प्राइमरी टीचर एजुकेशन। ठीक अच्छे। प्री प्राइमरी कौन कहूँ अर्थात प्राइमरी एजुकेशन पूर्व आम जो अंगनवाड़ी कहती 3 ରୁ 6 वर्ष पिला को प्राइमरी एजुकेशन 3 ରୁ 6 वर्ष आराम से लिखिपारे। 3 ରୁ 6 वर्ष प्राइमरी एजुकेशन 6 ରୁ आम कह क्लास 1 ରୁ क्लास 6 पर्यंत। ठीक अच्छे। सेकेंडरी एजुकेशन आम कह सेकेंडरी टीचर एजुकेशन, हायर एजुकेशन प्रोग्राम और हूँ भोकेशनल टीचर ट्रेनिंग। प्रथम दुईटा आम देखिले प्री प्राइमरी टीचर एजुकेशन आउ प्राइमरी टीचर एजुकेशन। सेकेंडरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जे कि बहुत एलिमेंटरी पढ़ाई पार आउ हायर एजुकेशन प्रोग्राम सेकेंडरी पढ़ाई पार। हायर एजुकेशन मीन्स आम कहीपर बीएड ट्रेनिंग है, इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है जो टीचर मैंने प्रोग्राम करती। हायर एजुकेशन प्रोग्राम पीजी है कौन हायर एजुकेशन प्रोग्राम चले। भोकेशनल ट्रेनिंग कौन है इंजीनियरिंग है, आईटी है कौच आम आईआईटी सार भल पढ़ाती फिटर से भल ट्रेनिंग नियंती सी कौन टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग रे भाग नहीं। ठीक अच्छे। एवं देखिए प्री प्राइमरी टीचर एजुकेशन कौट कौट सब चले आप जानते मॉन्टेसरी मरिया मॉन्टेसरी जे कि किंडर गार्डन बा केजी आम जो कहती से कौन प्रतिष्ठाता थे। नर्सरी प्री बेसिस रे आम कौन करे प्री प्राइमरी एजुकेशन चलाते। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू दिस कोर्स इज हायर सेकेंडरी एंड द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इन 1 ईयर। 1 ईयर कोर्स करथिबे आ मिनिमम स्टैंडर्ड होउची कौन हायर सेकेंडरी पास करथिबे। प्राइमरी टीचर एजुकेशन कौन कहूँ मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन इन द कोर्स ऑफ हायर सेकेंडरी काउंसिल एग्जामिनेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ द 2 ईयर कोर्स। मैट्रिक पर 2 वर्ष पाखापाखि से कौन करते ट्रेनिंग नहीं थे सीटी करूँ सीटी होता है मैट्रिक क्वालिफिकेशन थाए तापर आम कौन करते +2 कर हायर सेकेंडरी एजुकेशन पास करते तापर आम कौन करते प्राइमरी टीचर आम एप्लिकेबल होता। सेकेंडरी एजुकेशन टीचर एजुकेशन बीएड डिग्री थी दरकार। द मिनिमम क्वालिफिकेशन इज एंट्रांस इन ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन थी दरकार और एंट्रांस क्वालिफाई करता दरकार बीडी आम दिखती। हायर एजुकेशन प्रोग्राम 2 ईयर एमएड कोर्स करता दरकार 2 ईयर एमए एजुकेशन थी दरकार 2 ईयर पीएचडी कोर्स ये जहाँ भी चलो 2 ईयर एमएड कोर्सेस थी दरकार 2 ईयर एमए एजुकेशन थी दरकार 2 ईयर पीएचडी कोर्स आफ्टर एमएड एंड बीएड थी दरकार पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन सेम आस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन आफ्टर बीएड थी दरकार। वोकेशनल कौन कौन आवश्यक ट्रेनिंग टीचर इन टेक्निकल सब्जेक्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन डीपी थी दरकार। ट्रेनिंग कोर्स टू प्रिपेयर टीचर ऑफ म्यूजिक डांस पेंटिंग एंड फाइन आर्ट थी दरकार। 1 ईयर ट्रेनिंग कोर्स टू प्रिपेयर टीचर टू होम साइंस सर्टिफिकेट कोर्स इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट
courses for preparing specialists in the teaching of education, teaching of Hindi, geography, English, etc. এইটা ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର the structure of a teacher education curriculum and its vision in a curriculum document NCERT and NCT हम प्रथम पढ़िया प्रथम आम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCT पढ़िया देन तापर पढ़िया NCERT ठीक अच्छे the structure of a teacher education curriculum and its vision in curriculum documents NCERT and NCT at elementary secondary higher secondary level आमर एटी पाखापाखि प्रायतः यूनिट 1 जो रही यूनिट 4 टीचर एजुकेशन प्रथम बिट ए पाखापाखि आम हाफ कभर कर नवा ठीक अच्छे कौ कौ लेवल आम दबा प्री सर्विस टीचर एजुकेशन ट्रांजैक्शन अप्रोच देन नेक्स्ट पढ़ा गोटे मिनट पढ़ा ठीक अच्छे द स्ट्रक्चर ऑफ अ टीचर एजुकेशन करिकुलम एंड इट्स विजन इन करिकुलम डॉक्यूमेंट ऑफ NCERT एंड NCT एट सेकेंडरी लेवल ठीक अच्छे कौन रही सेकेंडरी लेवल देन हायर सेकेंडरी लेवल पढ़ा ठीक अच्छे जहाँ नेट सिलेबस पूरा मेंशन अच्छे आप देखिपारे जाए द प्रोग्राम इज comprised of 3 broad interrelated curriculum area को broad interrelated curriculum area अच्छे प्रथम हूँ पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन curriculum pedagogic studies engagement with the field ठीक अच्छे पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन क्या देखी हम सोसाइटी डिमांड ऑफ द कंट्री करिकुलम एंड पेडागोजिकल स्टडी कौन कौन अप्रोच कौन कौन मेथड क्यों वे कौ टेक्निक रही एनगेज विथ द फील्ड पिला केमिति आम एनगेज कर प्रैक्टिकल क्लासरूम रे प्रैक्टिकल लाइफ रे ताकू से कहूँ पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन आम कौन कौन रखापी चाहूँ देख लिखाई आराम से कोर्सेस चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप आपको रखा कंटेम्पोरारी इंडिया एंड एजुकेशन एबे घटना स्थिति एवं शिक्षा पद्धति को आखिया रखा लर्निंग एंड टीचिंग एथि क्वेश्चन आसता है मैक्सिमम कि पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन आम कौन कौन रखापी चाहती ठीक अच्छे लर्निंग एंड टीचिंग रखापी चाहती जेंडर स्कूल सोसाइटी नॉलेज एंड करिकुलम क्रिएटिंग ए इनक्लूसिव स्कूल फ्रेंड्स आर्थर क्वेश्चन आसला कि क्रिएटिंग एन इनक्लूसिव स्कूलटा क्यों पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन करिकुलम पेडागोजिकल स्टडी ना एंगेजिंग विथ द फील्ड ऑफ स्टडी ना नॉन ऑफ द अबव एथि क्वेश्चन आसला आराम से लिखिपर क्रिएटिंग एन इनक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम बाय स्कूल क्योंकि पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन अच्छे ठीक अच्छे स्ट्रक्चर ऑफ करिकुलम एंड पेडागोजिकल स्टडी एथिरे इंपोर्टेंट गोटे कौन NCERT बा NCT विजन अनुसार द कोर्सेस अंडर द करिकुलम एरिया ऑफ करिकुलम एंड पेडागोजिक स्टडीज आर 2 year पीरियड इंक्लूड कौन कौन रहिबो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम लैंग्वेज कौन केमी रहिबो अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट कौन कौन रहिबो पेडागोजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट आम कौन रखा इंग्लिश ना मैथमेटिक्स ना सोशल साइंस कौन आम पिला पढ़ेबा पिला क्यों थे ओरिएंटेड करवा देखूँ पेडागोजी ऑफ मैथ जा पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस ता नुहे डिफरेंट आसो मेथड रे असेसमेंट ऑफ लर्निंग कौन रहिबो आ होची ऑप्शनल कोर्सेस गुडी कौन कौन रहिबो NCERT रे ऑप्शनल कोर्सेस विल बी ऑफर्ड इन एरिया सच एज वोकेशनल वर्क एजुकेशन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन पीस एजुकेशन गाइडेंस एंड काउंसिलिंग और एन एडिशनल पेडागोजिकल कोर्सेस रहिबो एटा होची NCERT और NCT सेकेंड लेवल विजन गुड़िक क्वेश्चन आसता पारे असेसमेंट फॉर लर्निंग केवरे आसीबो करिकुलम एंड पेडागोजिकल स्टडी लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम केउ एरिया भीतर आसीबो करिकुलम पेडागोजिकल स्टडी ठीक अच्छे मोस्ट इंपोर्टेंट दीटा असेसमेंट फॉर लर्निंग लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम मन रखिए एबे आसी आमे एंगेज विथ द फील्ड द सेल्फ कि पिला निजे निजे एंगेज हेबे द चाइल्ड किमि एंगेज हेबो
कम्युनिटी केमी एनगेज हम सोसाइटी केमी एनगेज हम गोटे हूँ स्कूल केमी एनगेज हम क्या सहित प्रैक्टिकल फील्ड करिकुलम शुड बी practicable, measurable, applicable day to day life. स्पेशलाइज स्टडी रे कौन कही एनसीईआरटी और एनसीईआरटी देखा अपॉइंटेड टू टीच टीचर एजुकेशन शुड बी वेल क्वालिफाइड कल्चर्ड एंड हैविंग प्रोफेशनल क्वालिटी तीन टाइम गुरुत्व दी क्वालिटी कल्चर्ड एंड प्रोफेशनल क्वालिटीज क्वालिफाइड हो मिनिमम स्टैंडर्ड जहाँ अच्छे कल्चर्ड हो अर्थात कल्चर भी जानी नुहे कि आम अमेरिका टीचर ये पढ़ेगा स्पेशलाइज स्टडी से कल्चरल हो आम अमेरिका टीचर आने कि कल्चर सहित रिलेटेड थी दरकार प्रोफेशनल क्वालिटीज मैनेजमेंट क्वालिटी थी ओके आम कहीपर प्रोवोकिंग क्वेश्चन कर डेडिकेटेड वर्क कर ठीक अच्छे आम कह पिला एनगेज कर Beat questions from the present theoretical courses for MA methodology of educational research and dissertation रखा से कही कौन एमएड कोर्स रे एमफिल कोर्स एवं उठी आई कि कौन कहते देखा दोज हु पास्ट बीड और बीफिल मे बी गिवेन एडमिशन ऑफ एमफिल ये बीड आ एमएल आम कहीपर एमए जो आम एमए कोर्स पर आम कौन कर एमफिल कर ठीक अच्छे टीचिंग स्किल कौन कौन सब अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रिलेटिव इम्पोर्टेंट ऑफ कोर स्किल स्पेशल स्किल डीप नॉलेज अबाउट द बिहेवियर मॉडिफिकेशन कैपेबिलिटी ऑफ आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम एनालाइजिंग एंड सॉल्विंग स्किल यह सब टीचिंग स्किल कौन कौन जमी इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रिलेटिव इम्पोर्टेंट फॉर कोर स्किल और स्पेशल स्किल कोर स्किल कौन जो समस्त जेनेल टीचर मान पाखे मोस्टली जेनेल कोर से आम कहीपर पिला अंडरस्टांड कर कम्युनिकेटर हो पार भल स्पेशलाइज कौन मु गणित टीचर गणितर स्पेशलाइज करी एजुकेशन एजुकेशन स्पेशलाइज करी सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी स्पेशलाइज करी स्पेशलाइज स्किल डीप नॉलेज अबाउट द बिहेवियर मॉडिफिकेशन कैपेबिलिटी ऑफ आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम एनालाइजिंग दी एंड सॉल्विंग स्किल तापर देखिबा टीचिंग ऑब्जेक्टिव आ होची टीचिंग कल्चर इट मे बी इंक्लूड क्रिएटिव सोशल अंडरस्टैंडिंग इनकलकेशन ऑफ लीडरशिप ट्रेड गला मैग्नेटिज्म प्रोग्रेसिज्म एटीट्यूड एंड फेथ इन दी वर्थ ऑफ टीचिंग मैग्नेटिज्म मीन्स attractive personality knowledge of the mastery over the subject matter progressive attitude पिला मानकु असेसमेंट टाइमली करथिया दरकार फेथ ओवर द अर्थ टीचिंग और टीचिंग साथी सम्मान दउथा दरकार पीजी तक कौन कहूँ स्टेज स्कॉलर्स may select some significant problem and presents its solution after collecting a data and interpreting its statistically a research oriented कथा कहूँ ठीक अच्छे then vision in curriculum document of NCET and NCERT elementary secondary and higher secondary level कौन कौन तार अच्छे मिशन आ vision देखा ए पकईदेव या मध्य केउटा NCERT NCET vision अटे देखा कौन कौन प्रथम विजन आलोचना कर फास्ट फॉर सेल्फ लर्निंग रिफ्लेक्शन assimilation and articulation of new ideas not static not rigid but more flexible reflection assimilation with the various dynamic perspectives articulation of new ideas developing capacity for self directing learning जोटा हेटागोजी आ होची आम अंडरगोजी मैक्सिमम चले and the ability to think be self critical and to work collaboratively in the group it is a big important top most vision of the NCERT and NCT for self learning reflection assimilation articulation of new ideas developing capacity for self directing learning and the ability to think be self critical and to work collaboratively in the group okay the next देखिबा
for content enrichment to generate understanding and knowledge, examine discipline and knowledge and social realities related subject matter with the social aspect and develop critical thinking. ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ stereotype dogma belief को हटेकी आमे reality of subject matter, आमे reality of society, exam disciplinary knowledge, okay, to develop professional skill in pedagogy, observation, document analysis, drama, craft, storytelling and reflective inquiry करवा उचित. ठीक अच्छे तीन टाइम जगह प्रथम पिला को आम कौन करवा सेल्फ डायरेक्ट करवा, सेकेंडली रियलिटी साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करवा, थर्ड रे कहूँ पिला मानन को बोथ एस्थेटिक ब्यूटिफिकेशन ऑफ द स्किल एंड पेडागोजिकल ऑब्जर्वेशन शिखेबा. प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग आपनकर अच्छी आपन देखि पारिबे. प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एनसीटी एट दिस एलिमेंटरी सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल गला. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी प्री सर्विस टीचर एजुकेशन ट्रांजैक्शन अप्रोच. आम प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग टॉपिक डिफरेंट अप्रोचेस एंड मेथड जो अच्छे आम एक्सपोजिटरी कोलाबोरेटिव एंड एक्सपेरिमेंट आम देखा. ठीक अच्छे अब देखा प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग जोटा कि आम विभिन्न अप्रोच अच्छी. अप्रोच तीन भाग विभक्त कराई. कौन कौन अप्रोच तीन बार अच्छे गोटे हूँ कौन एक्सपोजिटरी, आउ गोटे हूँ कोलाबोरेटिव, थर्ड हूँ कौन एक्सपेरिमेंटाल एक्सपेरिएंशियल. देखा कौन कौन रही. फास्ट हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट अप्रोच कौन मेथड कौन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अप्रोच मेथड. फ्रेंड्स अप्रोच हूँ कौन वन्स पॉइंट व्यू पॉइंट द अप्रोच मेथडटा कौन बिग कॉन्सेप्ट. अप्रोच कौन कौन वन्स व्यू पॉइंट टुवर्ड्स टीचिंग और रेफर्स टू व्हाट वन बिलीव्स इन. कौन मोर बिलीव्स रही कौन मोर व्यू पॉइंट रही है मोर अप्रोच मु क्यों अप्रोच फॉलो कर रिगार्डिंग टीचिंग. ओपन हुई टीचिंग बिहेवियर आर बेस्ट. टीचिंग बिहेवियर अनुसार मोर व्यू पॉइंट कौन रही मु पिला केमी पढ़ेमी मेथड तो मुझे लेक्चर मेथड पढ़ेमी कि पिला क्यों अप्रोच पढ़ेमी मोर लेक्चर उपर कौन बिलीव अच्छी कौन व्यू पॉइंट अच्छी कौन एबिलिटी अच्छी कौन कॉम्पिटेंस अच्छी अप्रोच. मेथड कौन कौन ए सीरीज ऑफ रिलेटेड टू प्रोग्रेसिव एक्ट परफॉर्म बाय ए टीचर एंड स्टूडेंट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन. एथि कौन करा हम अप्रोच आम बिहेवियर को अचीव करिया एटी कौन ऑब्जेक्टिव अचीव करिया डिफरेंट आम पाइले एटा सीरीज ऑफ रिलेटिव प्रोग्रेस एंड एक्ट. किए एक्ट करिवो बोथ टीचर करिवो आ होची स्टूडेंट करिवो जहाँकि आमर लेसन प्लान जो ऑब्जेक्टिव अच्छी जो करिकुलम जो ऑब्जेक्टिव अच्छी आमर जो रही ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंस्टीट्यूट ताको आम अचीव कर पाइबा. टू टाइप्स ऑफ टीचिंग अप्रोचेस गोटे हूँ डायरेक्ट अप्रोच जहाँ कौन कह जाए डायरेक्ट अप्रोच. देखो फ्रेंड एक्सपोजिटरी आम कौन कहते डायरेक्ट अप्रोच कही था. आउ गोटे इनडायरेक्ट गाइडेड अप्रोच क्या कहते एक्सप्लोरेटरी मेथड कही था. गोटे आम तीन टाइम गोटे एक्सपोजिटरी कोलाबोरेटिव आउ गोटे एक्सपेरिएंटियल लर्निंग ताको आम देखा कौन कौन कहूँ. ठीक अच्छे फास्ट आम देखा डायरेक्ट अप्रोच जोटा आम नेट सिलेबस मेंशन अच्छे. एक्सपोजिटरी आम पिला एक्सपोज करवा डायरेक्टिव पिला आम जहाँ कंटेंट डायरेक्ट डिलीवर करवा एक्सपोजिटरी. इंडक्टिव ठीक अच्छे इंडक्टिव कौन जनरल टू स्पेसिफिक पिला ना डेमोन्स्ट्रेशन आम करी पिला आखि आगे देखा देन पिला हेतु किसी शिखे. ठीक अच्छे इनडायरेक्ट गाइडेड अप्रोच कौन कहूँ इंडक्टिव जनरल टू स्पेसिफिक आड़ जा. एक्सप्लोरेटरी जहाँ आम नेट सिलेबस अच्छी एक्सप्लोरेटरी अच्छी. ठीक अच्छे एक्सप्लोर करवा. रिफ्लेक्टिव कौन पिलार तार रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कर अर्थात क्रिटिकल थिंकिंग आउ टे आगे जीव. कंस्ट्रक्टिविज्म पिला निजे निजे शिखब कर प्रॉब्लम सॉल्विंग पिला को प्रॉब्लम दे पिला तार माइंड को खटेगी कौन कर प्रॉब्लम सॉल्विंग कर. लैबोरेटरी लैबोरेटरी कौन पिला प्रैक्टिकल फील्ड को निया एक्सपेरिमेंट कर शिखे. इनक्वारी बेस्ड पिला किसी गोटे प्रोब्लेम रखा से इनक्वारी कर प्रॉब्लम को सॉल्व करें. आउट हूँ कौन मेटाकॉग्निशन. मेटाकॉग्निशन कौन ऑल्सो एक्सप्लोरेटरी एक्सपोजिटरी नुहे एक्सप्लोरेटरी. मेटाकॉग्निशन कॉग्निशन टू कॉग्निशन आम जहाँ आउ टे तापर भापा मनकर मुझे कहली आम प्रायतः मेटाकॉग्निशन मेटाफिजिक्स अंडर आसे. मेटाफिजिक्स कौन
अच्छा टीचिंग एमती भल होता एमती कहीं भल होता एमती मेटाफिजिक्स एनालिसिकल पावर आम कग्निशन टू कग्निशन थिंकिंग ओभर टू थिंकिंग आम करवा ओभर थिंकिंग करवा थिंकिंग जहाँ भावुं आउ डीपली जाएंगे आउ भावा जहाँ बेटर रिजल्ट आमको मिल पार व्हेन टू यूज डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एक्सपोजिटरी गाइडेड इंस्ट्रक्शन एक्सप्लोरेटरी आम करवा ठीक अच्छे व्हेन टू यूज डायरेक्ट बा एक्सपोजिटरी कंटेंट ओरिएंटेड जो थी सीटा आम यूज कर फैक्चुअल इनफॉरमेशन यूज कर सिमिलर इनफॉरमेशन डायरेक्टली अवेलेबल नॉट एफर्ट टू लुक फॉर इट केवल डायरेक्ट कंटेंट प्रोवाइड करवा गाइडेड इंस्ट्रक्शन बा एक्सप्लोरेटरी कौन आम करवा जगह एक्सपीरियंसेस ओरिएंटेड एटा हूँ कंटेंट ओरिएंटेड थी दरकार डेवलपमेंटल फॉर्मुलेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल स्किल एटीट्यूड वैल्यू थी दरकार इनफॉरमेशन नॉट अवेलेबल नीड टू बी डिस्कवर्ड इनफॉरमेशन किसी आम नथिबो प्रॉब्लम आमको दिया आम एक्सप्लोर करिया विभिन्न आस्पेक्ट नहीं कि ठीक अच्छे यहाँ हूँ एक्सप्लोरेटरी डायरेक्ट बा एक्सपोजिटरी इंस्ट्रक्शन अप्रोच कौन कहूँ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इज ए वे ऑफ अ टीचिंग व्हिच इज एम टू हेल्पिंग स्टूडेंट एक्वायर सम बेसिक स्किल एंड procedural knowledge. It is straightforward and it's done in a step-by-step manner, not flexible. The emphasis is on how to execute the step of the entire procedure. Entire procedure step by step कौन तक follow करी जीवा slightly किसी असुविधा ना. This may involve a simple or a complex skill such as solving a problem by using mathematical इक्वेशन एटा मैथमेटिकल इक्वेशन आम कह साइकोलॉजिकल इक्वेशन जहाँ स्टेप बाय स्टेप रही आम फॉलो करके आसवा इट इंक्लूड प्रेजेंटेशन एंड रिसाइटेशन प्रोसेस जस्ट लेक्चर मेथड को मन रखु आज वेल आज टीचर स्टूडेंट इंटराक्शन टेडी हो आराम से चलती अटेंशन इज फोकस ऑन एवरी डिटेल ऑफ द प्रोसीजर जहाँ जहाँ कंटेंट अच्छी आम प्रोसीजर करवा पिला फ्लेक्सिबल दवानी रिजिड एनवायरनमेंट देखेदेवा से कहूँ कंटेंट मास्टरी एंड ओवरलर्निंग ऑफ द फंडामेंटल फैक्ट्स यार इंपोर्टेंट रहिबो टीचर नीड टू एरोज ऑफ आइटिन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट पिला मानकर इंटरेस्ट आउ कैपेसिटी को आम कौन करवा अवॉइड कराऊ एथिरे बा सेतिके आम ध्यान दे पार नथुवा एबे हम पढ़ा कौन कौन अच्छे आमर आमर जहाँ कोलाबोरेटिव आ हूँ एक्सपीरियंशियल लर्निंग कौन देखा या पढ़ा पूर्व हम देखा इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड डिफरेंट कौन ठीक अच्छे प्रथम देखिए इंडक्टिव मेथड इंडक्टिव कौन कौन डिफरेंट अच्छे फास्ट इंडक्टिव कौन देखा इंडक्टिव रे इट गिव्स न्यू नॉलेज बिकज मन रखिए सब डिडक्टिव हूँ जनरल टू स्पेसिफिक आड़ हो नो डिफिकल्ट इंडक्टिव कौन specific general it gives new knowledge but it does not gives any new knowledge सही knowledge ऊपर चलती हो it is method of verification but it is method of discover it is the method of instruction it is method of teaching child gets ready made information and make use for it but it child acquires first hand knowledge and information by actual observation it is quickly process it is slow process it is encourage independence on other sources but it trains the mind and gives self confidence in the initiatives there is a less scope of activity in it but it is full of activity it is downward process of thoughts and lead to useful result but it is upward process of thought and lead to principle okay इंडक्टिव और डिडक्टिव भितर आम डिफरेंट देखिले एक्सपोजिटरी कौन हुए फ्रेंड्स गोटे हूँ एक्सपोजिटरी कोलाबोरेटिव एक्सपीरियंशियल लर्निंग कौन हुए एक्सपोजिटरी कौन हुए कोलाबोरेटिव एक्सपीरियंशियल तीन मन रखिए एथरे मन रखिए LLD
लेक्चर लेक्चर प्रोवाइड करिया और होची डेमोन्स्ट्रेशन देवा लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मोस्ट इंपोर्टेंट एलडी मन रखिए एक्सपोजिटरी डायरेक्ट रे कोलाबोरेटिव कौन हुए प्रॉबिंग क्वेश्चन ओपन एंडेड क्वेश्चन कन्वर्जेंट क्वेश्चन आउट होची डाइवर्जेंट क्वेश्चन या क्वेश्चन बड़ अधिक फोकस थी एक्सपीरियंस लर्निंग कौन इनक्वारी करिवो स्ट्रक्चर ऑफ इनक्वारी गाइडेड इनक्वारी ओपन इनक्वारी आपको देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग ऊपर ये बहुत ध्यान दिए कोलाबोरेटिव कौन कोलाबोरेटिव आम देखा आम ऊपर अच्छी कोलाबोरेटिव टीचिंग कौन हुए लर्निंग इन एन एक्टिव प्रोसेस लर्निंग रिक्वायर चैलेंजेस लर्नर बेनिफिट व्हेन एक्सपोज टू डाइवर्स व्यू पॉइंट्स लर्निंग फ्लोरिश is a social environment. It is a collaborative learning environment. Group tasks, project method, intergroup discussion, conducive learning environment, multiple area, discuss teamwork. এটা সব কোন হইব collaborative. Collaborative কোন রহে coordination, collaboration and collaboration among the student and teacher হইতা ঠিক আছে but experiential learning inquiry कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर ऑफ इनक्वारी गाइडेड इनक्वारी ओपन इनक्वारी ए एक्सपीरियंशियल लर्निंग रे थाए ठीक अच्छे इनक्वारी बेस्ड एक्सपीरियंस बेस्ड थाए एडवांटेजेस कौन रही है एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कोलाबोरेटिव रे कौन होता है एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ग्रुप भीतर एक्टिविटी करता है कोलाबोरेशन कोऑर्डिनेशन इंटरेक्शन ग्रुप टास्क थाए इंस्पायर क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन एंड सपोर्ट डाइवर्सिटीज और सब पिला थे डिस्कस करा आर द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल किपर आम निज मैनेज करवा डेवलपमेंट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन स्किल डिबेट प्रेजेंटेशन लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप कर फर्स्ट और द डेवलपमेंट ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप समस्त मध्य इंटरपर्सनल रिलेशन रखा साहाय्य करे ठीक अच्छे आम कम्प्लीटली टीचर एजुकेशन जो रही यूनिट 1 को कवर कले मीनिंग नेचर स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन टाइप ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स द स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन करिकुलम एंड इज विजन इन करिकुलम डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनसीईआरटी एनसीटी एट एलिमेंटरी सेकेंडरी हायर एजुकेशन लेवल हायर सेकेंडरी लेवल पढ़ले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन ट्रांजैक्शन अप्रोच रे पढ़ले एक्सपोजिटरी कोलैबोरेटिव एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कंप्लीट आमर ए एवं बी को बढ़िया अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बेस teacher education from the viewpoint of Stulman's Dung Locke Habermas meaning of reflective teaching strategy for promoting reflective teaching mode of teacher education behavioristic mode कौन कौचे competency based and required oriented teacher education कौन कौचे ठीक अच्छे दो तीन क्वेश्चन डिस्कस करियो एटी आछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली फेरेड ऑपोजिट ऑफ कॉन्सेप्चुअल रिसर्च ऑपोजिट कार कॉन्सेप्चुअल रिसर्च इन द क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ रिसर्च राइट आंसर कौन एम्पिरिकल रिसर्च रे मोस्ट कौन करथांती ऑब्जर्वेशन करथांती एक्सपीरियंस माध्यम रे आको कौन करथांती ज्ञान करथांती तेणु बोथ ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस ने कौन हम एम्पिरिकल रिसर्च जहाँकि ऑपोजिट कार कॉन्सेप्चुअल रिसर्च ठीक अच्छे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज ऑल्सो नोन आज बेसिक और प्योर रिसर्च आम जानते बेसिक और प्योर रिसर्च क्या कहुए फंडामेंटल रिसर्च को कहुए कारण ये प्रथम स्टार्ट हुए किसी नॉलेज एक्सपीरियंस है प्रथम स्टार्ट करे यार प्रिंसिपल को जी अप्लाई करे अप्लाइड रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आम कह कंट्रोल ग्रुप दुईटा भितर आम देखिए इफेक्टिवनेस जानापी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप करते मैनिपुलेशन और कंट्रोल रखिकी एक्शन कौन लोकल एरिया प्रॉब्लम टीचर एक प्राय यूज करती क्लासरूम भितर लोकल एरिया प्रॉब्लम कौन रही देखते फ्रेंड्स क्यों रिसर्च काजुआल अर्थात व्हाई हाउ को डिस्क्राइब करता है एवं रिसर्च कर डिस्क्राइब करे या कौन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ठीक अच्छे काजुआल कौन करता है एक्सप्लेन करता है व्हाई करता है तेणुटा कौन हम एक्सप्लानेटरी रिसर्च डिस्क्राइब करता है कॉज को डिस्क्राइब करता है हाई आम कह पार व्हाई हाउ व्हाट व्हेयर कॉज को कौन करता है ना डिस्क्राइब करता है तेनाली एक्सप्लेन करता है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च आम कौन करते हैं कॉज को डिस्क्राइब करता
फ्रेंड्स एक्शन रिसर्च साइकेल गुड़ी कौन मन रखिए PAOR ठीक अच्छे PAOR पी रे कौन प्लान करवा जो क्वेश्चन आसे क्यों रिसर्च साइकेलिंग रिसर्च कहा जाए या हूँ एक्शन रिसर्च एक्शन बेसिकली कौटी था लोकल एरिया स्मॉल प्रॉब्लम क्लासरूम प्रॉब्लम ये क्षेत्र होता है प्रथम कौन प्लान करती एक्शन दिखती ऑब्जर्वेशन करती देन रिफ्लेक्ट करती इट इज ए साइकिलिंग प्रोसेस इट इज ए वन ऑफ द साइकिलिंग रिसर्च प्रोसेस कॉल्ड एक्शन रिसर्च ठीक अच्छे प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट कौन लिखाई एक्शन रिसर्च इट्स एम इज एन इमीडिएट एप्लिकेशन करने बट नॉट एनी डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी एक्शन रिसर्च कौन होता है इट एम यार मुख्य एम कौन इमीडिएट एप्लिकेशन करने बट नॉट एनी डेवलपमेंट थ्योरी डेवलपमेंट कौन होता है डेवलपमेंट किए करता है फंडामेंटल रिसर्च ठीक अच्छे It is research either initiated to solve the immediate problem or if the researcher find any problem during the course of this field investigation and observation he apply it ठीक अच्छे ता भीतर करू छोट मोट प्रॉब्लम है एक्शन रिसर्च माध्यम सॉल्व कर एक्शन रिसर्च इट इज फोकस ऑन इमीडिएट एप्लिकेशन नॉट इन द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी और नो जनरल एप्लिकेशन इट इज नॉट जनरल एप्लिकेशन कारण आम लोकल करते केमी जनरलाइज करवा इट इज टू रेमेडी प्रॉब्लम्स डायग्नोस्टिक इन स्पेसिफिक सॉल्यूशन पाई ही होता है ठीक अच्छे क्वेश्चन देखा कौन कौन क्वेश्चन कौच फ्रॉम द लिस्ट गिवन बेलो आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट व्हिच अप्रोप्रिएटली describe the main characteristics of step in scientific method फ्रेंड्स साइंटिफिक मेथड रे कौन हुए आम प्रायतः सैंपल को कंसीडर करती नहीं ठीक अच्छे तो सैंपल प्रथम जो अच्छी काटी दिंतु तो सैंपल करने सी कटि जाऊँ ना सी 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 कटि जाऊँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर अब हम जानते कि कहीं हम फास्ट कौन लगा आइडेंटिफाई एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम फास्ट आम आइडेंटिफाई करती तापर से कौन ऑप्शन नंबर डी को डायरेक्ट आसे से कौन पॉपुलेशन सैंपल को कंसीडर करे ना साइंटिफिक रिसर्च डायरेक्ट कौन आसे डी को आसे फॉर्मुलेशन हाइपोथेसिस कहीं है यार कौन टेंटेटिव रही सॉल्यूशन ताको फॉर्मुलेशन करे देन जमी प्रोसेस आसे रिसर्च कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज एंड एनालिसिस ऑफ डाटा देन आम कहीपर फिक्सिंग द फ्रेमवर्क ऑफ एनालाइजिंग डाटा से फिक्स कर न था ठीक अच्छे कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालिसिस ऑफ डाटा गला परे फॉर्मुलेटिंग कंक्लूजन देता है कौन से डाटार एनालिसिस अर्थात डाटा को एक्सपेरिमेंट करता है एनालिसिस डाटा इज नॉट ए साइंटिफिक रिसर्च से कहूँ वेरिफिकेशन रिजेक्शन आउ मॉडिफिकेशन ऑफ द हाइपोथेसिस को रखी था तीनटा सैंपल को कंसीडर करे ना कौन फिक्स मेथड को सी आपणाए ना जोटा फिट हे से ही करें ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड था राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी बा 2A-D-E-G-H द एस्पेल कमिटी रिपोर्ट लीड मोर एम्फासिस ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट एस्पेल कमिटी जहाँ टीचर एजुकेशन आसला से कौन कहला मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग उपर अधिक फोकस देता तो द एस्पेल कमिटी रिपोर्ट लीड मोर एम्फासिस ऑन मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग फॉर आम कहीपर क्या मल्टी डिसिप्लिन अर्थात गोटे डिसिप्लिन आम मल्टी डिसिप्लिन को आम जोड़ा NEP 2020 एम्फासिस देज जदि मो क्वेश्चन आसे एस्पेल कमिटीर टाइटल कौन थिला हायर एजुकेशन उपर रिनोवेशन प्लस रिजुविलेशन इन हायर एजुकेशन एस्पेल कमिटी रिपोर्ट थिला आम कह रिनोवेशन एंड रिजुविनेशन इन हायर एजुकेशन सिस्टम हंटर कमिशन कौन कही इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल बॉडीज इन द
मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन लोकल बॉडी एंगेज करवा सैडल कमिशन कौन कहे सेकेंडरी एजुकेशन इज टू बी कंट्रोल बाय दी ए बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एवं रेलवे कमिशन कौन कहते एस्टाब्लिशमेंट ऑफ ए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एट दी सेंट्रल लेवल उपर गोटे आम एजुकेशन डिपार्टमेंट करिया किए कहते रेलवे कमिशन कहला सेंट्रल कमिशन कौन कहला बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कथा कहला हंटर कमिशन लोकल बॉडी कंट्रोल दी प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम which of the following is not a component of the National Knowledge Commission NKC किए साम पिट्रोडा यार चेयरपर्सन थे ठीक अच्छे एथरे कौन हुए एक्सेस दी नॉलेज कितला नॉलेज कॉन्सेप्ट डेलीवर ऑफ द सर्विस नॉट बोरोइंग ऑफ द नॉलेज तो यहाँ नाला पाँचटा कॉन्सेप्ट थिला तांकर प्रथमे एक्सेस द नॉलेज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नॉलेज क्रिएटिंग ऑफ नॉलेज एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज देन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेलीवरी ऑफ द नॉलेज एक्सेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट देन आम कौन कह एप्लीकेशन देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नॉलेज ठीक अच्छे NSSF as envisaged by the National Knowledge Commission stated for envisaged का रोज यार फुल फॉर्म कौन सिंपल पचार यार सिंपल हो फुल फॉर्म हो नेशनल साइंटिफिक एंड सोशल साइंस फाउंडेशन ठीक अच्छे नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस फाउंडेशन NSSF जो आम आलोचना करते रिमार्क ऑफ 5 फील्ड ऑफ नेशनल नॉलेज कमिशन कौन कौन अच्छी नॉलेज एक्सेसिबिलिटी अच्छी नॉलेज कॉन्सेप्ट अच्छी नॉलेज क्रिएशन अच्छी नॉलेज एप्लीकेशन अच्छी सर्विस और डिस्ट्रीब्यूशन इट इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन जो देखा नॉलेज एक्सेसिबिलिटी नॉलेज कॉन्सेप्ट नॉलेज क्रिएशन नॉलेज एप्लीकेशन सर्विस एंड डिस्ट्रीब्यूशन डेवलपमेंट लाइब्रेरी नहीं रिसर्च नहीं केते जन मेम्बर को लेकिन कोठारी कमिशन गठन होता पचरा जाए तेरे 17 जन मेम्बर नहीं कोठारी कमिशन गठन होता दि टर्म पोकायोके वाज इंट्रोड्यूस बाय एटा जापानीज लैंग्वेज तेरे सिंजिओ सिंगो ही इंट्रोड्यूस करते ठीक अच्छे क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी engaged by the NCT in the year of 2017-18 for teacher education institution in India कौन हम आम कहीपर नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल यदि एमती किसी क्वेश्चन आसे अरेंज द फॉलोइंग stages of a total quality management in the sequence approach by Dahal Great Christensen जो रिसर्च देते बा कांजिंग 2002 रे जो रिसर्च देते से कहते कि क्वालिटी आम आम हासिल करने मैनेजमेंट करने क्यों स्टेप को फॉलो करा उचित प्रथम कौन क्वालिटी कंट्रोल करहब ना प्रथम कौन करवा इंस्पेक्शन करवा ना कौन करे इंस्पेक्शन करे प्रथम करिया इंस्पेक्शन ऑप्शन नंबर सी सी प्रथम अच्छी क्वालिटी इंस्पेक्शन तापर कौन करवा ना क्वालिटी आम कंट्रोल करवा थ्रू द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इवैल्यूएशन तापर क्वालिटी एश्योरेंस करवा तापर देवा टोटाली क्वालिटी मैनेजमेंट ग्रेड देखिए आम जा A+ कि A++ कि जहाँ भी ग्रेड हो ठीक अच्छे रिसर्च से क्वालिटी मैनेजमेंट इन ए सिक्वेंस प्रोसीजर कथा से कहते कि डेल ग्रेट क्रिस्टेनसेन एंड कैंसी 2002 रे कहते जदि एमती किसी क्वेश्चन आसे एजर्सन रिजनिंग रे क्वालिटी एश्योरेंस बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फंक्शनिंग इन द इंस्टीट्यूशन यस इट इज इंटीग्रल पार्ट रिजनिंग कौन कहूँ नाक प्रमोट्स द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल IQAC इन accredited इंस्टीट्यूशन IQAC कौन करे नाक प्रमोट करे तेणु बोथ कौन हो करेक्ट हो ठीक अच्छे
and B is correct, R is the correct explanation of the A. ठीक अच्छे. NAAC promotes the establishment of a integral quality assurance cell. It accredited institution. ये accreditation प्रदान करे कहाँ support रे IQAC मध्य एथिरे support करी था. ये last question तमनों पाई. The total number of article in the United Nations Convention on the right of person with disability निहाती भाव में comment section ले जणेइबे. आंसर कमेंट सेक्शन में निहत जनइबे. थैंक यू सो मच फॉर कम्प्लीटली वाचिंग इन दिस वीडियो. पेशेंसली समस्त धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ. पुणी देखा आउ गोटे नुआ सेसन ले जहाँकि एथर रहा टीचर एजुकेशन ले. टीचर एजुकेशन डिस्कस कले तो बहुत सारा कनसेप्ट डिस्कस कले, क्वेश्चन में डिस्कस कले. आउ यहाँ डिस्कस करवा टीचर एजुकेशन बी पार्ट को जोटा कि बहुत सारा मॉडल अच्छे. आउ सी डी पार्ट को आम ओवरऑल डिस्कस करने चेष्टा करवा. ठीक अच्छे. थैंक यू सो मच.